Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I'm hoping that you would be safe and happy at home. Alhamdulillah. So let's start with today's lecture. And diversity among animals. My chapter number nine. My today's topic is from chapter number nine, Animalia, and my today's topic is Hemichordates, and that is the last topic of the chapter Hemichordata. That is chapter number nine. And now, what are these hemichordates, right? So, starting from the meaning of the term hemichordates, we have discussed the chordates. Chordates, why these are called as chordates because they have the notochord in them, right? The word chorda means that hemichordate came from two Greek words, hemi and chorda. Hemi means half, and chorda means a string. It means the chordates have full string, and these organisms have half a string. By the way, this is not the meaning of the term. This is just the meaning of the term, while the hemichordates are different from the meaning. Why the meaning is this, that all chordates have four chordatian characters, and any organisms who have all those four characters are considered as the chordates, while any other organisms that have one, two, or three such characters, specifically these four characters, among these four, if they have one, two, or three, then such organisms are called as hemichordates. Okay, that is why these organisms are called as hemichordates. So they show characteristics of both echinoderms and chordates. So what is the meaning of this thing? That they have some of the characters of invertebrates while some of the characters of chordates, right? So they have the characters of both the groups. Echinoderms are the invertebrates and chordates are the chordates, So are the vertebrates, by the way. So echinoderms and chordates, what are the features? Why these two groups are very close to each other? Because echinoderms are which is considered the last phylum of invertebrates. Both of the groups are deuterostomes. If you can recall, so the deuterostomes are the organisms that have lastropore, which would be converted into anus, and while another very major difference between that, they have radial cleavage, and they have indeterminate cleavage, and they have another very important point, that there's mesoderm, their coelom is the result is coming from the endoderm. So this is very important to note, that these echinoderms, which was the last phylum of the of invertebrate, why echinoderms are placed at the last, even having after having the in very systems which are which are not developed in it properly. So because these organisms are deuterostomes like chordates, these organisms are deuterostomes. And let's have a look on the organisms examples of this group, right? थोड़ा सा शक्लें देख लेंगे तो आई थिंक सो दिस वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड कि डिस्कस क्या कर रहे हैं. हेमिकॉर्डेट्स, ये है जी हेमिकॉर्डेट, अजीब सा वर्म लाइक लग रहा है ना. And another example of hemichordate, that example is Secoglossus. Secoglossus, the name of the organism is Secoglossus. ट्यूब लाइक बॉडी लग रही है, आगे कुछ लंबा सा निकला हुआ है, वी विल सी जो इट के है क्या भला ये. देन इज सेकोग्लॉसस, एंड देन another example, इसके अंदर ये जो फ्रंट माउथ था ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, बट इन दैट ऑर्गेनिज्म दिस इज स्मॉलर वन. इसमें बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, आगे भी दिखाऊंगी, यानी कि हैं फ्यू जेनर हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हैं. हाँ, सॉलिटरी भी हैं, कलोनियल भी हैं. ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म. दिस इज Belenoglossus, Secoglossus and Belenoglossus. These two examples are present in the other major examples of this group. You can see the living genera and hemichordates. Why we are discussing hemichordates basically? So we are discussing hemichordates because of its evolutionary link between invertebrates and vertebrates. That is the transitional group that is going to connect the invertebrates and vertebrates is called as hemichordates. That's why we are discussing these organisms. These organisms are some of the organisms are very small in their cells, while the giant one can reach up to 5 feet, यानी कि मेरी हाइट जितने होंगे. So 5 feet जितने भी हैं, इनके लंबे भी हैं इसमें और उसमें छोटे भी हैं. However, hemichordates are not classified as true chordates, although they are quite closely related, right? तो ठीक हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया कि हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स में तो नहीं आते, लेकिन दोनों के अंदर जिम्मेदारिटीज़ है. बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्डेटियन कैरेक्टर्स आर notochord, dorsal hollow nervous system, gill slits, I mean pharyngeal pouches, and post anal tail. If
they have any one of the character like pharyngeal pouches or the notochord or the ectodermal or outermost nervous system, in that case they would be considering as the relatives of the chordates. Some DNA-based studies of evolution suggest that hemichordates are actually closer to echinoderms than to true chordates, right? So that's another very important because hemichordates have one or two features of chordates, while rest of the features are similar to that of the echinoderms. That's why we called them as that they are more closely related to the echinoderms. Okay, then hemichordates, the naming of the hemichordates, they are called hemichordates, they are called prochordates, they are called acorn worms, right? They are also called as acorn worms. Now why they are called as acorn worms? अभी आपने उनकी शक्ल देखी थी, आगे से कोई लंबी सी चीज निकली हुई थी. So because of the presence of that part, that pre-oral part, ठीक है ना, वो आप यूं समझ लें कि जैसे हाथी होता है ना, हाथी के माउथ के अपर लिप, समझ लें माउथ पार्ट, हमारा अपना मुंह, हमारे अपने जो लिप्स हैं, माउथ की ओपनिंग है, द अपर लिप, अपर लिप जो है ना हमारा बड़ लॉन्ग ग्रो कर जाए, ठीक है ना, आगे ज़्यादा सा ग्रो कर जाए. सो दैट extended part of the mouth, the opening, is called as proboscis, right? अब वो है एक, वो unsegmented part है. पीछे मैंने आपको फिगर दिखाई थी ना अभी, तो हमने कहा था लंबी सी एक चीज़ आगे निकली हुई थी. दूसरे ग्रुप में वो चीज़ थोड़ी छोटी थी मगर वो भी माउथ की एक्सटेंशन ही थी, ठीक है ना. उसके ऊपर अब अगर एलिफेंट की बात करूं तो उसके ट्रंक के ऊपर स्नाउट थी, मतलब उसकी वो ट्रंक है और वो नोज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है ना उसको. इसी तरह एलिगेटर है, एलिगेटर का भी वो फ्रंट वाला पोर्शन, आई मीन मुंह वाला पोर्शन थोड़ा लंबा है. सो सो अब ये देखो डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है. The unsegmented preoral part of the body of a segmented animal, ठीक है ना. The unsegmented preoral यानी कि जो preoral है, माउथ से के साथ जो माउथ से आगे जो पार्ट लगा हुआ है, पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ सेगमेंटेड, बाकी बॉडी सेगमेंटेड है, अभी हम देखेंगे बाकी बॉडी कैसे सेगमेंटेड है, अभी हम चेक करते हैं. लेकिन जो अगला वाला पोर्शन है ना, माउथ के अगला वाला पोर्शन, इज बेसिकली इट्स कॉल्ड एज, इट इज अनसेगमेंटेड. थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको दोबारा. एंड दैट अनसेगमेंटेड पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज डाइवर्टिकुलम, यानी कि वो आगे बड़ी सी चीज निकली हुई है लेकिन वो अंदर से खाली सी है, स्पेस है उसके अंदर, ठीक है ना. समझे एक थैली सी निकली हुई है आगे और उसमें स्पेस भी है. और डाइवर्टिकुलम, और ट्यूबुलर आउटग्रोथ, ट्यूब लाइक आउटग्रोथ है, पाइप से आगे निकला हुआ है और अंदर से खाली है. फ्रॉम माउथ कैविटी फॉरवर्ड इनटू द प्रोबोसिस, और उसको हम प्रोबोसिस नाम रख दिया गया उसका ना. रिजेंबल्ड अ रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड, पहले लोग समझते थे कि शायद ये नोटोकॉर्ड है, इस डेफिनेशंस में आज भी शामिल है ये, लेकिन लेटर ऑन स्टडीज ने सजेस्ट किया कि नो, इट्स नॉट नोटोकॉर्ड. ये मैंने ना एक साइड बॉक्स की तरह, जैसा नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन साइड बॉक्स में डाल दी जाती है, मेन का पार्ट नहीं होती. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू व्हाट डाइवर्टिक्यूलम इज, गिवन यू द मीनिंग ऑफ द डाइवर्टिक्यूलम. इट इज डाइवर्टिक्यूला एनी स्मॉल पाउच और सैक दैट फॉर्म्स इन द वॉल ऑफ अ मेजर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यानी कि इस तरह की डिजीज भी हो जाती है, उससे भी डाइवर्टिक्यूला कहते हैं. मीन्स के कोई एक बॉडी पार्ट के अंदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोलन, कोलन बाहर को ग्रो करना शुरू कर देती है और उसमें पाउच या सैक सा बनना शुरू हो जाता है. तो प्रोबोसिस भी एक ऐसा ही पार्ट है कि उसकी माउथ की वहाँ पे ओपनिंग थी और उसका वो माउथ का अपर हिस्सा जो है वो आगे को मूव करना शुरू कर गया, माउथ से आगे वाला है वो हिस्सा, और वो लंबा ग्रो कर गया. है वो अनसेगमेंटेड, है वो प्री ओरल, है वो ट्यूब लाइक. सो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि इसके अंदर एक प्रोबोसिस है. प्रोबोसिस बहुत से और ऑर्गेनिजम्स में भी है, स्पाइडर्स में होता है प्रोबोसिस, बहुत से और इंसेक्ट्स में होता है सकिंग के लिए ना, फ्रूट्स नेक्टर सक करने के लिए, ब्लड सक करने के लिए, तो ये हो सकता है. अच्छा जी, सो अभी तक हमने देख लिया, इसके नाम ही देखे हैं अभी तक हमने, हेमिकॉर्डेट्स, प्रोकॉर्डेट्स, कॉर्नवर्म्स, और उसका ताल्लुक कहाँ से, किस ग्रुप से है. शक्लें देख ली, आपको समझ में आ गया कि लंबा सा है, वर्म लाइक है. अभी देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका हेमिकॉर्डेट्स. हाँ ये देखो ना, ये प्रोबोसिस आगे जो माउथ है. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अनसेगमेंटेड और सेगमेंट्स. तो एक सेगमेंट ये है, एक ही सेगमेंट है और एक ही सेगमेंट है. तो बॉडी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, ठीक है. सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, मतलब मगर बॉडी के हिस्से 3 है ना. अच्छा, हैबिट एंड हैबिटेट देख लें पहले.
मरीन वर्म्स, दे आर कॉल्ड एज मरीन वर्म्स, यानी कि कहाँ होंगे, मरीन वाटर में होंगे। देन सॉलिटरी, अकेले अकेले रहते हैं। नेकेड, नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं। स्लो मूविंग और सेडेंट्री, बहुत स्लो मूव करते हैं या फिर अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, यानी कि ज़मीन से अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के साथ, दे अटैच टू सम सबस्ट्रेटम, इफ दे आर अटैच टू सम सबस्ट्रेटम इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज सेडेंट्री। तो जो कोलोनियल है वो सेडेंट्री होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो जिस तरह ये बना हुआ है, कॉर्न वॉर्म बना हुआ है ये सेकोग्लॉसस, तो ये तो मूव भी कर सकता है, मतलब मूवमेंट इज सो स्लो, एंड स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स चीन से स्टार्ट हो गए हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट्स हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। सो ऑल दोज कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द chordates are the present in hemichordates as well. There are triploblastic, you all know the term now, coelomates and deuterostomes, in that the coelom की development की जो peak है वो deuterostomes हैं, and hemichordates are deuterostomes and bilateral symmetrical. And its body is, by the way, divided into three parts: a proboscis, a collar, and a trunk. So the body is divided into three parts. अगला वाला हिस्सा proboscis, दरमियान में एक अपने collar like structure दिखा, और पीछे लंबी सी जरा rounded सी body है, worm like, जो कि इसका trunk कहला रही है। ओके जी। Hemichordates are distinguished by a threefold division of the body. At the forward end of the body is a preoral lobe, proboscis. Behind this, a collar. Last comes a trunk. ये तो body दोबारा तो बता दी हमने. Each contains a division of the coelom. हर एक के अंदर अपना अपना coelom है, ठीक है ना, और जो true development है. The name hemichordate means half chordate, and hemichordates share some but not all of the typical chordatian characteristics. This was I was telling you कि इसके अंदर कोई एक या दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स। सो सारे तो नहीं हो सकते, अगर सारे होते तो ये तो कॉर्डेट्स होते। अच्छा, फिर देयर आर ब्रेंकियल ओपनिंग्स। अब वो कौन सा कैरेक्टर है, बेसिकली ये ब्रेंकियल ओपनिंग्स है इसके अंदर, गिल स्लिट्स जिसको आप कहते हो, या फेरेंजियल पाउचेस, वो इन्होंने रिटेन किया है, एंड दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स, एंड दे हैव द वेरी वेल डेवलप्ड कॉर्डेटियन कैरेक्टर इज गिल स्लिट्स और ब्रेंकियल ओपनिंग्स। एंड देयर इज अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी कौन सा मैं कह रही हूँ। एंड सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो शायद नोटोकॉर्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है, माउथ के साथ ही एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, वो थोड़ा सा हार्ड सा है, वो असल में उसका स्केलेटन है। सो बहुत सी जगहों का ख्याल है कि ये वो नोटोकॉर्ड है, और वैसे रेफरेंस से लगता यही है कि शायद वही नोटोकॉर्ड होगा, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर यही है। एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड, यानी कि जो उसका नर्वस सिस्टम है वो भी किसी हद तक डेवलप्ड है, प्रेजेंट है इसके अंदर, मगर वो भी बॉडी की डॉर्सल में है, स्किन के अंदर है, और वो डिफ्यूज्ड काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम है, हमारी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं, सारे पार्ट्स देखते हैं, फिर हम बातें करेंगे आगे। इस फिगर पे आ जाओ, पार्ट बाय पार्ट जाते हैं। अच्छा, ये तो नज़र आ गया हमें प्रोबोसिस, फिगर थोड़ी ब्लर है मगर चलो पार्ट समझ में आ रही है। ये प्रोबोसिस, इसका आगे वाला सारा पोर्शन, ये प्रोबोसिस का सीलोम है, ठीक है। और प्रोबोसिस का सीलोम, अब ये देखो, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, एंड दैट ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। ग्लोमेरुलस भी क्या है, ग्लोमेरुलस भी एक गुच्छा ही है कुछ ब्लड वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर का, और ये अटैच हो जाता है विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये इसका सारा नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बॉडी से रिमूव कर दीजिए। ये यहाँ पे रेड कलर कर दिया है जस्ट टू शो यू दैट दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द, बट दीज सॉरी ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखो, ये चीज़, ये वाली जगह माउथ है, एक और फिगर शायद दिखा, शायद इसको छोटा करती हूँ शायद अच्छा नजर आए। ये वाली जगह माउथ है, राइट। ग्लोमेरुलस ये किडनी है, ये इसका वाइड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट, यानी कि प्रोबोसिस में ओपन होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। माउथ के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है इसका ग्लोमेरुलस या डाइजेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये चीज़ है माउथ, ये जगह, ये माउथ है, और ये आगे सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इसके सीका है, हेपेटिक सैक्स हैं, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये एनस है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ट्यूब लाइक है, मतलब कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इस ट्यूब लाइक, जे शेप्ड या यू शेप्ड कुछ लोग कहते हैं, और ये है क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया।
अब हम देख रहे हैं हर जगह की अपनी अपनी सीलोम है, कॉलर पे अपना सीलोम है, बाकी बॉडी में अपना सीलोम है, पर सीलोम है ज़रूर, ठीक है ना, विद ट्रू सीलोम है, दोनों साइड पे मेसोडर्म इज प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ तो समझ आ गया हमें। अब जो ब्लू ब्लू लाइन है, दैट ब्लू लाइन इज एक्चुअली द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सॉरी, डॉर्सल साइड पे डॉर्सल होगी, वेंट्रल साइड पे वेंट्रल होगी। ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और ये स्किन के साथ चिपकी हुई होती है, बिल्कुल स्किन का पार्ट होती है। तभी मैं से कह रही हूँ डिफ्यूज, इनके एक मैसेज अगर आते हैं ना तो पूरी बॉडी हैज़ टू रिएक्ट टू दैट मैसेज। ऐसा नहीं होगा जैसे आपकी अगर एक उंगली को आप मैसेज देते हो तो दस यू जस्ट नीड टू मूव दैट फिंगर ओनली, मगर इसके साथ ऐसा नहीं होगा, इसको अपनी पूरी बॉडी एक मैसेज पे मूव करनी पड़ेगी। दैट व्हाट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। एज फार एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसर्न, व्हेन द मैसेज इज फॉर द हैंड्स इट इज जस्ट गिवन टू द हैंड्स, व्हेन द मैसेज इज फॉर द लेग्स इट इज जस्ट गिवन टू द लेग्स। सही है ना, तो वो इसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये माउथ भी समझ आ गया हमें, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया हमें, हमें एक्सक्रीटरी हमने देख लिया, सर्कुलेटरी देख लिया, नर्वस देख लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम उसी तरह है, और ब्लड जो है प्योरीफाई होता है थ्रू द गिल्स। ये वो गिल स्लिट्स हैं जो इसके अंदर हम जो रिटेन किया इन्होंने मेजर कैरेक्टर, ये वो है। अच्छा, अब आपको ये एक नज़र आ रहा है ब्लैक से कुछ स्ट्रक्चर विच इज़ लेबल्ड एज अ स्टोमोकोड, जिसको ये नोटोकॉर्ड कहते हैं ये इसका नोटोकॉर्ड है। तो कुछ ना कुछ रूडिमेंट्री सा मगर स्ट्रक्चर कहते हैं प्रेजेंट ज़रूर है। एंड दैट स्ट्रक्चर द एक्सटेंशन ऑफ द अपर माउथ के आगे जो एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस। मैंने बता दिया आपको सीलोम, सारे पार्ट्स हमने तकरीबन देख लिए। Digestive system, a tube-like gut, straight or U-shaped with a terminal anus. Excretory system, no nephridia, nephridia तो कोई भी नहीं है. They possess glomerulus in proboscis coelom as an excretory organ, तो ये इसके coelom में open हो जाता है और यहीं से इसका waste बाहर निकल जाता है. अब देखते हैं ये वाली एक फिगर, ये इसका माउथ है, ये दोनों साइड पे ये जो चीज़ निकली हुई ना, ये यहाँ से ये और ये यहाँ से ये, दैट इज कॉल्ड एज कॉलर। ये आगे सारा प्रोबोसिस है, ये सारा ये कॉलर है, और पीछे ट्रंक है। ट्रंक में ये नज़र आ रहे हैं आपको फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है ना। फेरेंजियल पाउचेस के अंदर सुराख हैं, वो गिल स्लिट्स हैं, फेरेंजियल स्लिट्स हैं। ये ट्रंक रीजन है। अच्छा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है। प्रोबोसिस का स्केलेटन इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यही था स्टोमोकॉर्ड। और ये है ग्लोमेरुलस जो कि सीलोम में, प्रोबोसिस के सीलोम में ओपन हो गया, और ये इसी सीलोम से फूड वेस्ट जो है वो बाहर चला जाएगा। ये एक्ट करते हैं जैसे, मैं इसको क्यों कह रहे थे कि नेफ्रीडिया नहीं है, लेकिन ये उसी तरह मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स का, पता नहीं आपको पता है या नहीं था, कलेक्ट करके बॉडी से वेस्ट यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ से वो जैसे मर्जी बाहर जाए, बेसिकली वो माउथ से बाहर जा रहा होता है। अच्छा, आगे जाते हैं। इस इन प्रोबोसिस सीलोम एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ओके, ये वाली स्लाइड हमने डन कर ली है। ओके जी, कुछ और एग्जांपल्स आएंगे, ये मैंने दिखानी थी असल में आपको, ये वाले तो सारे, ये तो आपने देख लिया सेकोग्लॉसस, ये वाला ग्रुप आप देखो किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये वाली एग्जांपल यहाँ पर, ये देख रहे हो आप, ये क्लूनियल हैं सारे, एक कॉमन से निकले हुए, ब्रांच से निकले हुए, कुछ अंदर है, कुछ अभी ग्रो कर रहे हैं। ये इनकी ट्यूब है, ये इनके उसी इसमें टेंटिकल्स हैं, ये प्रोबोसिस है, कॉलर है, स्टॉक है, पूरी जिससे पूरी बॉडी आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्लूनियल हेमिकॉर्डेट्स हैं। ये देखिए मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। तो ये मैंने इसलिए सोचा कि आपको एक और शक्ल इनकी दिखा देती हूँ। ओके, आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ इसकी। सॉरी, मुझसे ना ये आगे पीछे हो जाता है। ओके, now reproductive system, as far as reproduction is concerned, the sexes may be separated or united, means maybe they are monoecious or dioecious, and fertilization is external, and reproduction is normally sexual, but pterobranchs also reproduce by budding. नॉर्मली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एक ग्रुप है जो कि इसमें एक ग्रुप है जो कि कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। डेवलपमेंट में इंक्लूड फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा होता है। हेमिकॉर्डेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स विद रेडियल इनडिटर्मिनेट क्लीवेज एंड एंटीरोसिलसीलोम डेवलपमेंट। दिस इज ऑल द टर्म्स यूज्ड इन ड्यूटेरोस्टोम, सारे वर्ड्स लिखे हुए, रेडियल क्लीवेज, indeterminate cleavage, anterocellus and coelom development is of anterocellus type, that what is called as deuterostomes and hemichordates and chordates and echinoderms. All three groups are
are deuterostomes, and this is the larva of hemichordates. If you can recall Bipinnaria larva, that Bipinnaria larva, we also have discussed this type of larva in case of echinoderms, a starfish ki maybe हमने we have discussed this early Bipinnaria, and this is Tornaria, which is similar to that of the organism. So these are their larval stages of hemichordates. So it may include the larval stages as well. Then is the hemichordatian characteristics recap. So this is the simplest of all group. Share characteristics with echinoderms and chordates, deuterostomes and radial cleavages, right? So यहाँ तक तो ये बातें आपको याद हो गई हैं. अब हम recap कर रहे हैं, ठीक है ना? These are exclusively marines and soft bodies, means these are worm-like bodies, soft bodies. They have no skeleton still, except that क्या था वो stomachord, and exclusively marine, and these basically that's why they are called as marine worms. And body is divisible into proboscis, collar and trunk. Why they are called as conworms? G. So they are called as conworms because they have a preoral structure present in their body, and that preoral structure is called as proboscis. Because of the presence of proboscis, they are called as the conworms. And notochord occurs only in the anterior end of the body, which is called as a stomochord, and that is what is called as notochord. And numerous paired gill slits are present, which is the structure which is well developed in this group. That's why they are called as hemichordates. Nervous tissue lie embedded in the epidermis and occur both on the dorsal and ventral surface. And I have already shown you the ventral nerve cord, the dorsal nerve cord. Both of the nerve cords are present very close to the skin and the outer epidermis layer of the body, and the nervous system is of diffused kind of nervous system. Coelom is divided into three regions, namely protocele, mesocele, and metacele. So I have shown you that the coelom of proboscis, the coelom of the collar, the coelom of the main body. So that what is according to the place they are named as. But there is no need to name them, but the thing which you need to remember, that they have the true coelom of deuterostomes type. And fertilization is external because both organisms sexes may be separate in this group, so they have for external fertilization. And that's the end of my this chapter. Alhamdulillah, this is Animalia, diversity among animals, and according to the reduced syllabus we have covered all of the topics. And if you have any question, any query, you can ask me. You can write me the questions in the comments, and you can you can your feedback is very very important to me. If you give me the feedbacks, I will improve my lectures according to the need of the federal board. I thank you all for the patience listening. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरे लिए भी और अपने लिए भी, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इस वबा से निजात दिलाए. आमीन. अल्लाह हाफिज.